Assalamualaikum dear students. Today our topic is अंजुमन नुसरतुल इस्लाम 1905. पिछले लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन J&K में द रोल ऑफ मिशनरीज में बिस्को स्कूल के बारे में पढ़ा था. बिस्को स्कूल बनने से पहले कश्मीर में मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कोई वजूद नहीं था. बिस्को स्कूल पहला इंस्टीट्यूट था जिसकी वजह से यहाँ मॉडर्न एजुकेशन की बुनियाद पड़ी. इसके बाद जो नए नए स्कूल्स बनने लगे और डेवलपमेंट होने लगी एजुकेशन के फील्ड में. बिस्को स्कूल जो था वो एक मिशनरी स्कूल था. मुस्लिम्स में वो एक तरह का कंफ्यूजन होने लगा. कहीं जो मेजॉरिटी में कश्मीरी मुस्लिम्स यहाँ पे थे उनमें ये कंफ्यूजन होने लगा कि कहीं ये मिशनरी स्कूल हमें क्रिश्चियनिटी की तरफ ना ले जाए. बहुत सारे जो कश्मीरी मुस्लिम्स थे वो इलिटरेट रह गए. इस चीज़ को देखते हुए कि मुसलमान बहुत पीछे रह गए, मीर वाइज के ख़ानदान से गुलाम रसूल शाह ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलकर, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल जो था वो गुलाम रसूल शाह का था, उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा अंजुमन नुसरतुल इस्लाम. It was established in 1899. 1899 में अंजुमन नुसरतुल इस्लाम की जो है फाउंडेशन डाली गई. Beginning at Rajouri, Anjuman Nusratul Islam had a humble beginning in a cottage in the Rajouri Kadal locality of central Kashmir. By 1912, Mir Wais family had transformed the seminary into a school offering both secular and religious education. सेंट्रल श्रीनगर में एक जगह है राजौरी कदल, वहाँ से एक कोटेज में जो है इसकी शुरुआत हुई थी. 1912 में मीर वाइज की जो फैमिली थी उन्होंने ये शुरू किया था. उन्होंने अपना एक अच्छा रोल प्ले किया था इस चीज़ में कि एक तो ये कि रिलीजियस एजुकेशन देते थे और साथ में सेक्युलर एजुकेशन भी बच्चों को देते थे. Spread of networks in the decades to come, Anjuman Nusratul spread its networks of schools throughout Kashmir, enabling thousands of students to receive education. Kashmiri Education Circle had a brand name, Islamic School. उन्होंने पूरे कश्मीर में तालीम का नेटवर्क जो है वो फैलाया था और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम जो है हासिल करने के लिए वो बच्चों को कह रहे थे. उनका एक उनके ब्रांड का जो नाम था उन्होंने उसका नाम रखा था इस्लामिक स्कूल्स. यूनिकनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सबसे अलग चीज़ें इसमें क्या थी, सबसे ख़ास चीज़ें इसमें कुछ ऐसी रखी गई थी. वो क्या थी, इसमें हर तरह की एजुकेशन जो है वो दी जाती थी. There is something unique that distinguishes the famous Islamia High School in Srinagar from the educational, social, cultural and religious services to the people of Jammu and कश्मीर. इसमें कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी भी थी जो इसको दूसरे स्कूल से अलग करती थी. It has been engaged in rendering educational, social, cultural and religious services to the people of जम्मू एंड कश्मीर. ये क्या करते थे, तालीम तो देते थे, साथ साथ में सोशल फंक्शंस भी अंजाम देते थे. कल्चरल एंड रिलीजियस सर्विसेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अंजुमन Nusratul Islam had played a splendid role in spreading the Islamic studies side by side with modern education. एक साइड वो इस्लामिक एजुकेशन भी देते थे और साथ साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी देते थे. उन्होंने बहुत सारे रोल एक साथ में निभाए हैं. It has produced scholars, religious reformers, political leaders, educationists, engineers, high-ranking officials. उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर, रिलीजियस रिफॉर्मर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एजुकेशनिस्ट्स, इंजीनियर्स, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, जैसे हम मिसाल के तौर पे देखेंगे जैसे द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, GM शाह, रिलीजियस स्कॉलर्स लाइक मीर वाइज कश्मीर, शहीद मीर वाइज, मौलाना मोहम्मद फारूक, लेट गुलाम अहमद
Ashai, the first registrar of then Jammu and Kashmir University, Dr. Ali Jan Mohammad Amin Chaspi, former registrar Kashmir University. یہ جو ہے ان کے علاوہ بھی بہت سارے نام یہاں پہ دیے گئے ہیں جو بہت بڑی ہستیاں رہی ہیں جو اس آرگنائزیشن سے جو ہے پڑھ کر نکلے تھے. برانچ آف انجمن نصرت الاسلام. Branches of Anjuman Nusrat al-Islam. The branches were established at Renawari, Srinagar, Dalgate, Bijbehara, Naushehra and Islamabad, Anantnag. ان جگہوں پر جو ہے اس کی برانچز کھولی گئی تھی. سم ویو پوائنٹس. بکلیٹ پروڈیوسڈ بائی انجمن. یہ بکلیٹ بھی پروڈیوس کرتے تھے اور بکلیٹس بھی ایشو کرتے تھے. محمد ابراہیم شاہ view. The booklet edited by engineer Muhammad Ibrahim Shah, General Secretary of the Anjuman, states the basic Darasgah bloomed into a full-fledged Islamic-oriented college by 1923, wherein besides Quranic education, studies in Maulvi Alim, Maulvi Fazil, Munshi Alim and Munshi Fazil are being offered under the affiliation of Kashmir University and degrees awarded. Meerwise Umar Farooq's view. Islamia High School is a precious heritage. یہ جو ہے ایک precious heritage ہے. The new generation needs to be made aware of this. We have 20 to 23% of students in the school who are studying as a first generation. So therein lies the real contribution. We have to uplift the downtrodden. Old students have to come forward and help the Anjuman to restore its glory. Finances we can rise, but the question is of manpower. Here our own people have to cooperate and come forward. The civil society has to contribute to the Anjuman. اب جو ہے اب ہم اس کی ایمز اور آبجیکٹیوز کے بارے میں ہم دیکھیں گے. پہلا جو ہے وہ ہے ماڈرن ایجوکیشن ود اسلامک ٹیچنگ. وہاں پہ جو ہے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ اسلامک ٹیچنگ بھی دی جاتی تھی. سیکنڈ ہے ٹیچنگ آف القرآن اینڈ السنہ. وہاں پہ جو ہے قرآن اور السنہ کے بارے میں شریعت کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا تھا. بیلنس بٹوین ماڈرن ایجوکیشن اینڈ ریلیجن. وہاں پہ جو ہے بیلنس رکھی جاتی تھی ماڈرن ایجوکیشن اور ریلیجن ایجوکیشن کے بیچ میں, کیونکہ وہاں پہ خالی ماڈرن ایجوکیشن کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا تھا, وہاں پہ دونوں کی طرف جو ہے وہاں پہ دھیان دیا جاتا تھا. لیڈرشپ ٹو پرووائڈ رائٹ ٹائپ آف لیڈرشپ. یونیورسل پیس. ایسی تعلیم دینا ان انسٹیٹیوشنز میں جس سے یونیورسل پیس آ جائے, جس سے دنیا میں امن پیدا ہو. ان ایمز پہ کام کر رہا تھا انجمن نصرت الاسلام. آج ہم نے انجمن نصرت الاسلام کے بارے میں پڑھا. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو.